ET नाउ स्वदेश का आज पहला जन्मदिन है और इस बात से हमें एक गर्व महसूस होता है कि ET नाउ स्वदेश ने एक साल के अंदर अपना जो किरदार था बखूबी निभाया है। बड़ो देश के साथ पिछले 12 महीनों के अंदर हमने जो भी खराब हो सकता था शायद देखा है। इन्फ्लेशन, वॉर अर्थात युद्ध, एक प्रकार का हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम और एनवायरनमेंट जो हमने ग्लोबली देखा, और उन कठिनाइयों के बावजूद भी इंडियन इकॉनमी इस समय बढ़ रही है। सबका मानना है कि इंडियन इकॉनमी के जो अच्छे दिन हैं वह अभी चालू ही हुए हैं और आने वाले समय में ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस के बावजूद इंडियन इकॉनमी बढ़ती रहेगी। और इस बात को जब हमने ET नाउ स्वदेश का उद्घाटन किया था, केवी कामत साहब ने बड़ा ही साधारण तरीके से हमें समझाया था कि वाई ही इज़ बुलिश ऑन इंडिया एंड वाई द बेस्ट इज़ येट टू कम। आज हमारा जन्मदिन है और जो हमारे ET नाउ स्वदेश में पहले गेस्ट थे केवी कामत साहब, उन्होंने भी आज हमारे चैनल पे आने के लिए समय निकाला है। कामत साहब, एक साल 365 दिन, मैं घंटों और मिनटों की बात करूँ तो आंकड़े बड़े लंबे लगेंगे, मगर एक साल अच्छा कटा और आप हमारे पहले गेस्ट थे और आज हमारे आप जन्मदिन पर दोबारा आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पहले आप जन्मदिन पे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर द पास्ट अचीवमेंट्स। आपने जैसा कहा, एक साल बहुत ही अच्छा चला और हमने कुछ कहा था कि अच्छे दिन आएंगे देश के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। मेरे हिसाब से वो अभी चालू हो गए, मोमेंटम गेन कर रहे हैं और आगे जाके विल फ्रूटिफाई इनटू समथिंग ग्रेट। कामत साहब, India is right now the 5th largest economy in the world. In terms of stock market ranking, we are amongst the top 10. तो हालांकि एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है जब हम बात करते हैं जी वास्तविकता से हम एक डिकपल्ड हैं और हम विश्व में जो समस्या हो रही है उसके बावजूद एकदम स्थिर खड़े हुए हैं। मगर इतनी बड़ी इकॉनमी जो कि विश्व की 5th बिगेस्ट इकॉनमी हो चुकी है, कितने समय तक इन ग्लोबल कठिनाइयों से बच सकती है? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है काफी ट्रांजिशनरी थिंग्स है। हम मेरे हिसाब से 5th थे, अभी चेक करने का है हम कहाँ है, 4th है या 3rd है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे मैंने आपका प्रोग्राम में अभी देखा, पाउंड का मूवमेंट देखिए, आप देखिए यूरो का मूवमेंट और आप देखिए जापानीज येन का मूवमेंट। जो हम लोग देख रहे हैं उनका जो GDP था was on the basis of old conversion rate, as far as I know. अभी आपने recalculate किया with the current conversion rate for their currencies to the dollar, तो क्या हो रहा है उनका GDP, क्या नया नंबर आएगा और हमारा GDP का क्या नंबर आएगा? मेरे हिसाब से भी वो improved because they were strengthened against those two currencies. But I would leave it to the experts to work this out. मेरे हिसाब से हम clearly on a path of upward movement. Probably we are at 4, heading to 3 in very quick time. But Mr. Kamath, what about the realistic challenges? High inflation, challenging environment in terms of rate tightening, problems in emerging markets. How long can we remain insulated even though we are the best, but sometimes the best can also take a back seat? मैं तो यूनाइटेड स्टेट अदर है, मैं तो पॉजिटिव्स को देखता हूँ, बाद में जो भी नेगेटिव्स है उसको आई विल ट्राई टू पुट इट, बिकॉज मेरा माइंडसेट जो है आई थिंक इज पॉजिटिव। आप देखिए हमारा जो बैलेंस शीट से या कॉर्पोरेट इंडिया के या बैंकिंग इंडिया के, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के, have never been cleaner than what it is today. मेरा 50 बरस का मार्केट में यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जन्म में मैंने इतना साफ, इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं देखे। तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव ये है कि
unlike other countries, particularly developed countries in the West, हमारा जो inherent strength है कि हमको इतना कुछ काम बाकी है करने के लिए, in the sense that we have to traverse from जो मैं कहता हूँ कि 3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी से 25 ट्रिलियन का इकोनॉमी in the next 25 years, but 25 ट्रिलियन in 25 years, वो जो ट्रैवर्स करने का है, वो अपॉर्चुनिटीज है क्या? मैं I'll tell you the opportunities. पहला तो है अपने को, at least from the government end, we will have to support, for example, our water management, our infrastructure management in certain areas, particularly roads and railways. बाकी का जो infrastructure है private sector कर रहा है, whether it is telecommunication, whether it is ports, airports, private sector कर रहा है, and then manufacturing private sector कर रहा है. And as I said, जो balance sheets है वो बिल्कुल मजबूत है अभी. And then आ रहा है services sector, which is all doing well. और उसके ऊपर there is a piece which we call I would call the digital India. Digital India जो मेरे हिसाब से अगले 5 बरस में will probably be 20 to 25% of the economy. मेरे हिसाब से आज वो लगभग 3, 4 या 5% होगा, but that is going to happen. That is all the new things, the new startups that you're looking at. जो 70,000 startups के बात कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये जो है नया इंडिया की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. 70,000 स्टार्टअप्स, आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 20 वर्कर्स पर स्टार्टअप, 1.5 मिलियन पीपल ऑलरेडी है. और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है आप नंबर पिक कीजिए, ये 1.5 मिलियन के लिए 5, 6, 7. हम लोग जब आईटी सेक्टर का जो फर्स्ट ग्रोथ हुआ था 2001-2002 में, ये बोल रहे थे कि एवरी आईटी सेक्टर जॉब, उसमें 5-6 दूसरे जॉब्स क्रिएट होते हैं. तो आप यही डिजिटल इंडिया के लिए अप्लाई कीजिए, 1.5 मिलियन और मल्टीप्लाइड बाय अबाउट 6 और 7, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलता है राउंड फिगर roughly 10 million jobs created in the last few years. हम लोग, I think we are not reckoning all these things in it as we go along. Plus, I think digital India has just started. So, if I look at it, जो water resources में हमको काम बाकी है, जो infrastructure में काम बाकी है, roads, rails, ports, airports, telecommunication, power, green power particularly, and उसमें जो momentum बढ़ रही है, then we come to manufacturing. Manufacturing, because a growing economy, manufacturing growth will be 1 to 1.5 times the economic growth. So, वो factor करने का है. Plus, as I said, the services stroke digital India, ये सब देखा तो we are in a different league in terms of opportunity compared to the West. जी हाँ, वहाँ problems है, but let us look at those problems in context and whether they apply to us, and whether we are behind the curve in जो भी करेक्शंस करने का. बेसिक मैं एक ही नंबर देखता हूँ. आप देखिए कि हमारा इन्फ्लेशन क्या है और हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो क्या नेगेटिव कैरी है उसमें से. मेरे हिसाब से 1.5% का नेगेटिव कैरी है. हमको 100 सालों से ये सिखाया है कि आप लोग इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन को मैच करके चलने का है, नहीं तो विल बी डिजास्टर. एंड वी हैव बीन रिलीजियसली फॉलोइंग दैट. गुड. Thoda we are behind, but I am completely comfortable with that. Now juxtapose it with the West, जहाँ यूरोप में डबल डिजिट इन्फ्लेशन है. आप पिक कीजिए नंबर 10, 11, 12, whatever it is, but इंटरेस्ट रेट जो है 0, 1, 2 बस. तो मेरे हिसाब से नेगेटिव कैरी और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो हम कहते हैं लगभग डबल डिजिट्स में है यूरोप में. What is the future? I think they have to reset themselves. Plus, जो भी उनका एनर्जी का क्राइसिस है, whatever reasons, I won't go into the political context, that is real and that has to be worked on. And then, if you look at the US, yes, उन्होंने corrections किया है, मेरे हिसाब से वो corrections will bear them fruit. There will be some pain, but in the course of time there will be. And आज मैंने देखा last 2 days, global turmoil is also creating a yo-yo effect in oil prices. And now, if we anticipate a global recession, and the sort of challenges that a large part of consuming world, that is Europe, UK, is going through, मेरे हिसाब से oil prices will actually be on a downward trend, which is all good news for us. So जो भी issues है, as long as we were not an export predominant nature, I think is now coming to our advantage. That is, we are looking at the domestic market. अलग दूसरे opportunities है, we can talk about that.
the plus one opportunity is there is going to be added. So मेरे हिसाब से there will be immediate stage knee-jerk reaction that will happen to India in terms of our own context. But if you look at, and we should stay focused on our long-term opportunity. That long-term opportunity is there very clearly as far as I can see. कमत साहब, आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है और कई लोगों का मानना है जी कोविड के बाद जो एक अपटिक हमने ग्लोबल इकोनॉमीज़ में देखा था, उसके बाद इकोनॉमीज़ में लेवरेज काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और इस बार जो गिरावट आएगी 2008 से भी ज़्यादा आएगी. दिस इज़ द फियर. व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल सेटअप सर? ग्लोबल सेटअप का फियर एब्सोल्युटली करेक्ट है. सिंपल रीजन, जो लेमन क्राइसिस था उसके आफ्टर दैट मेरे हिसाब से 6 to 8 months most of the economies started recovering. Yeah, some economies had to give deep bailout, for example the US, but other economies started changing, recovering very quickly. Humble, I think, came back very quickly. Yahan tak mujhe yaad hai, within 6 months we were back onto normal growth, thanks to I would say some proactive or positive steps that we took. So we were back. But India of 2009 and India of today is a completely different, I would say, proposition. Then, if you look at corporate India, we're all over-leveraged. Over-leveraged, debt-equity ratio of corporate India के वो समय पे देखे तो मेरे हिसाब से तब around 2 or little over 2:1. It had improved from 3.5:1 in 2000 to 2000 to a little over 2 in the year 2009. अभी जो देखा completely unleveraged. And अभी again आप देखें कि cash flow देखिए मेरे हिसाब से as a banker I would look at that single number along with leverage as something to look at in terms of how to forecast what Indian the investing companies would do. Cash flows have been never so solid as they are the past. And this we thought first was because of the effect of slowdown in 2020 or slowdown in 21. But I was refreshing myself quarter on quarter up. Last quarter of 2020 देखिए और आज तक देखिए June quarter, top line growth is steady, tax growth is steady, and profit after tax growth is steady. लगभग 20 to 25%, in some cases slightly more, but 20-25% has been the steady thing. So we are actually in a different situation than we were post Lehman. The world, I think, actually is in a worse situation than post Lehman. Because of the various things we discussed, the inflation being so high, the lack of corrective measures to tackle inflation, and I would say they're staring at जो recession जो आने वाली है उसको share कर रहे हैं. हमारा situation मेरे हिसाब से अलग है, almost completely अलग है. ये I don't want to say this कि कुछ impact नहीं होगा, थोड़ा impact होगा, हो सकता है. मेरे हिसाब से वो transitionary होगा. कमत साहब, आरबीआई गवर्नर से हमने जब लास्ट चर्चा करी थी तो उन्होंने एक प्रकार का हमें ग्लाइड पाथ दिया था कि 2024 के एंड तक इन्फ्लेशन 4 से 4.4% तक आ जाएगी. आपको क्या लगता है, यह संभव है या संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल. The reason is very simple. I think they have done their arithmetic and they have understood what is driving us to a situation where inflation is, and clearly a lot of it was imported. And I think by staying away from necessarily following the economic theories of 100 years back, I think we have saved ourselves. And I must congratulate both the Reserve Bank and the central government for taking a path which has, in a way, kept us out of the challenges of what other countries are facing. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि this is not an accident. This is the consequence of deliberate positive action taken by, in a careful, tending way, taken by the regulators or monetary policy authorities to make sure that we this time are stable. And I think that is a firm belief that I have. And given that, I would entirely agree with what I say. See, उसमें और एक आप we need to factor in as we go along. Okay, this whole issue of how long will we be connected with one, fiat currency primarily, that is the US dollar.
When in a situation today you have the other stronger currencies of the past, that is the Western currencies, all disintegrating. आप येन को देखिए 100, 105 से 140, 145 तक गया है. And then you look at where euro is, where pound is. And against these currencies we have strengthened. So something different is happening in the global financial sphere, as it were. और हम लोग, I think, उसमें से we'll have to carefully watch it. And the interesting fact is that our leaders or policymakers have clearly said that as we go along, we will need to see. In fact, we will have to do it along with other emerging markets, maybe other markets, how in course of time, we in a way de-dollarize our economy, or at least get this impact of a single currency, which can cause swings, to be lesser on our economy. I will leave it to the policy makers, but I'm sure a path will be found. And not only from an Indian point of view, I'm sure every country, every monetary policy authority, every leader in every country is looking at how to get into a stable environment where we do not have these shocks. And I would say that the next 2 years are going to be probably in economic history the most interesting that we will see. And all this, India is very well poised. But Kamath साहब, अब bullishness या जो अच्छे sometimes there are challenges when you are the best in the town. And one big challenge, Mr. Kamath, could be that if so much of inflows come into India via the FPI route and by the FDI route, it automatically will stoke inflation. Can Indian economy digest so much? We'll see. I think there is a little bit of time because we have, consequent to the events of the last 1 year, we have gone through challenges in terms of our own management of the exchange rate, as it were. I think some inflows coming in will be good. After that, if we have plenty of riches, again, if you see, Nikun, we have learned how to neutralize exchange rate fluctuations and how to calm down the markets. So I'm sure we will adopt appropriate measures to do that too. So मेरे हिसाब से I don't think that as a challenge. And let me put it in context. If you look at all growth patterns, start from Japan in the 60s to the last country which grew at a rapid pace was China, from say 90s to now. One clear thing is seen: as your economy propels at a much higher rate of growth, as I'm saying India will, your currency will have a natural tendency to strengthen. And I think we should welcome that because that gives you the economic power as you go along. And I think we will see very interesting things. And we cannot ward off investment coming into the country. We should welcome it because we have, this meets other priorities that we have, particularly employment and so on. So I would think that if growth happens the way I'm looking at it, currencies will tighten. If growth happens the way I'm looking at it, yes, there will be FDI and other foreign flows coming into the market. And I think our policymakers have demonstrated an ability to deal with this as we go along. But as I say, that is a problem of riches. We should welcome it. आखिरी 2-3 सवाल कामत साहब, अगर हम देखें इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो बड़े बैंक हैं वो और बड़े हो रहे हैं, उनको कासा मिल रहा है, उनको मार्केट शेयर गेन हो रहा है. छोटे बैंक्स हैं मगर वह एक प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं और फिनटेक को तो भारी मार पड़ी है बिकॉज ग्लोबल वैल्यूएशंस इस समय फिनटेक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशली बैंक्स के अंदर हु विल बी द विनर, हु हैज़ द राइट टू विन? I'll put it in a very simple way, Nikunj. The winner, not only in the financial sector, but in every single sector in India, will be those who will learn, who are already agile and nimble, and are able to work with a digital, in a digital mindset, as it were. And that would primarily mean the CEO has to be a technology architect. Since he may have no technology background at all, but he should have the mind of a technology architect. He should have the ability to work with, you mentioned, the new digital companies and together drive his business or her business to new heights. And I'm sure we will see these sort of leaders not only in banking, but we will see them in every single area, because
The digital startups have not only done things in the banking area, they've done a whole lot of things in other areas too. And we should embrace that. We should not allow it to, in a go waste, as it were. So I've always said that as I looked at these digital startups over the last 1.5 years in more detail, meeting people, talking to them, and so on, one thing has struck me. इन्होंने phenomenal value create किया है, value in the platform. उन्होंने जो नहीं create किया है valuation, तो एक artificial valuation का number डाल के you chase that without having the cash flow, yes, we'll give you some challenges. But I'm sure these are all very smart people, very smart companies. They're very smart backers. They will figure out a way how the old economy and these people who epitomize the new economy work together in a synergistic manner. And those players from the old economy, financial services or other ones, who can partner and get this mindset of an agile mindset, a nimble mindset, and a technology interlaced mindset are going to be the winners. So I don't want to take any names, don't want to take any character description. It could be anyone, but the ability should be to think like a tech company, work with the tech companies, and take your company forward. कामत, आप ET Now स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चैनल को हमेशा अपना सहयोग दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। Thank you.